Praise the Lord, Highest Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotion time. God is good all the time, and all the time our God is a good God. प्रभु हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा अभी तक. And if God willing, tomorrow early morning we are planning to leave from here and hope to be back home on Saturday evening. And Sunday, definitely want to worship God in our Highest Praise Church Worship Center. Hallelujah. We've been learning from the Word of God. हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं on the series Made to Prosper या फिर Designed to Prosper, or else you can say Created to Prosper. परमेश्वर ने हमें और आपको रचाया ताकि हम दुनिया में स्ट्रगल नहीं करें दूसरों की तरह. But even in our struggles, God says, I will bring prosperity. Because वचन कहता है परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए जो है वो छोटा योजना नहीं है, वो छोटा प्लान्स नहीं है. उनका योजना आपके लिए और हमारे लिए बहुत 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 बढ़िया है. Because His desire is that you and I should prosper in our spiritual life. हमारे आत्मिक जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, उन्नति आना चाहिए. हमारे शरीर में, शारीरिक जिंदगी में उन्नति आना चाहिए. हमारे पैसों के मामले में, फाइनेंसेस में, हमारे करियर में, हमारे जॉब्स में, जहाँ भी हमें परमेश्वर रखे, परमेश्वर का हृदय यही है कि you and I will prosper in Him. So we've been learning about it. I think part 5 तक हमारा हुआ. This is part 6. And last week we spoke about one topic which is patience, perseverance. क्योंकि हम ये सीरीज को ले रहे दूसरा पत्रुस के किताब उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन से. We are learning on this topic made to prosper based on this word led by the Holy Spirit. God's man of God, Patrus, Peter has written this word, and he says, if you want to be prosperous, अगर हमारे जिंदगी में prosperity, आशीषें, परमेश्वर का promises का fulfillment को देखना है, what does he say there in chapter 1 verses 5? He says, for this very reason, make every effort to add to your faith. मैंने पहले भी कहा, विश्वास हम सबों को है. वो विश्वास किसने दिया? वचन कहता है God has given each one of us a measure of faith. यानी हमारे पास फाउंडेशन है, विश्वास है. एंड उसके ऊपर पत्रुस कहता है there are 7 aspects, 7 steps, 7 qualities that we need to develop in our lives. सिर्फ प्रार्थना से नहीं होगा, सिर्फ मैं विश्वासी बोलने से प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगा. पत्रुस कहता है विश्वास अच्छा है, विश्वासी बनना अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे 7 खूबियां हमारे जिंदगी में बढ़ते रहना चाहिए. व्हाट आर दोस? हमने उसके बारे में पढ़ा. इट सेज गुडनेस होना चाहिए, यानी अच्छे काम, अच्छे बर्ताव. वी शुड सो गुड इनटू पीपल, क्योंकि वचन कहता है व्हाट यू सो यू विल रीप. अगर हम अच्छे चीजें, अच्छाइयां लोगों के जिंदगी में हम बोएंगे तो क्या होगा? कटनी के समय में हमारे जिंदगी में भी only good things will come to us. That is why virtue, goodness is important. Then it says knowledge. वहाँ पर कहता है ज्ञान, बुद्धि होना बहुत जरूरी है. We need to have the knowledge and the wisdom of God. Then we spoke about self-control. Self-control भी बहुत important है. We all want to control everybody around us. हम सबों का इच्छा रहता है कि हम दूसरे लोगों को कंट्रोल करें. लेकिन पत्रुस कहता है if you want to be prosperous and you want to have a good life, you need to learn how to control yourself. Yes, we learned about it. Then last Tuesday, इस Tuesday को हमने सीखा perseverance, patience. हमारे जिंदगी में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन के आधार पर पेशेंस इज वेटिंग ऑन गॉड फॉर हिज परफेक्ट टाइम. यस, टेल समबडी आई एम वेटिंग ऑन गॉड फॉर हिज परफेक्ट टाइम. क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में इफ ही हैज प्रॉमिस्ड समथिंग, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिलीव इट ब्लाइंडली. बिलीव इट ब्लाइंडली. ये मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस है, मेरा टेस्टिमनी है. इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड समथिंग, ही इज फेथफुल टू फुलफिल इट फॉर अस एट हिज परफेक्ट टाइम. सो वी नीड टू वेट ऑन हिम. हमें perseverance or patience चाहिए so that we can wait on God completely. So we learn till then. Hallelujah.
Now we will learn today. It says, and to perseverance you need to add godliness. Godliness को अभी हिंदी में भक्ति, परमेश्वर का भक्ति. That is what godliness is. God's desire is that we lead a righteous life. Yeah. परमेश्वर का हृदय यही है कि आप और मैं, हम परमेश्वर के जो संतान हैं, we live a godly life या फिर एक righteous life. Godliness क्या है? Quickly we will learn a little bit. I wanted to understand this word so that we know what godliness is. Godliness is not some action. It is not just showing people I'm righteous. No, godliness is a lifestyle. It has to be something that is developing in our lives. That is why पत्रस कहता है हमारे जिंदगी में godliness, भक्ति भाव होना जरूरी है, भक्ति होना जरूरी है. Godliness क्या है? The Greek word of godliness is eusebia या फिर उसका spelling is E-U-S-E-B-E-I-A. Eusebia. That's the word. Eusebia. Eusebia means devotion to God that results in a life that is pleasing to Him. Devotion to God. या फिर हम परमेश्वर के लिए हमारा जिंदगी को we are devoting, we are giving ourselves या फिर we are separating ourselves to God, through which हमारे जिंदगी में जो भी आए हमारा लाइफ से परमेश्वर is pleased. God is pleased with our life. That's very important. That's a question that we need to keep asking ourselves. Is God pleased with my life? Yes. As children, we want to please our parents, isn't it? हम जब बच्चे हैं, हमारा एक इच्छा होता है कि हमारा पेरेंट्स हमारे जिंदगी से बहुत खुशी हो. When we go and give our exams, हम लोग रिजल्ट्स आते, it's not about how much marks did I get. मुझे उसमें कितना सक्सेस, वो नहीं है. For many children, in fact for us, it will be always, how will my parents feel? Oh, how proud will they be? The same way for you and me, हम जब परमेश्वर के संतान हैं, God's word for us is godliness. उसका मतलब ये है कि we are giving our life. हम अपना एक जिंदगी को इस तरह से बिताए जिसका अंतिम जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, that God is pleased with our life. Hallelujah. Praise the Lord. Now, when we speak about godliness, जब हम भक्ति के बारे में कहते हैं, there are two parts to it. Listen to it. Two parts to godliness. The first one is God word attitude या फिर परमेश्वर का वचन का एक एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए. That is reverence and respect to God and His word. परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है. An attitude is a quality of a person to recognize that God exists and to long to be in a relationship with Him. जब ये एटीट्यूड हमारे पास रहेंगे या फिर जब हम एक गॉड वर्ड एटीट्यूड, उसका मतलब गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन क्या हम आदर करें. एट द सेम टाइम इट इज टुवर्ड्स गॉड. हमारा एटीट्यूड, हमारा जिंदगी, हम दुनिया के तरफ देखकर नहीं चल रहे. आवर अल्टीमेट गोल इज टू प्लीज गॉड. That is why the Bible says, fix your eyes on the Lord. When we are in this world, we don't fix our eyes in this world. हम दुनिया के चीजों में हमारे दृष्टिकोण को, हमारे फोकस को नहीं लगाए, परंतु हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए? स्वर की ओर, परमेश्वर की ओर. God's word, it's towards God. An attitude that recognize God exists. हमारे अंदर वो विश्वास हर समय होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा. भले कठिनाई हो, तकलीफें हो, मुसीबतें हो, गरीबी हो, बीमारी हो, अच्छे समय हो, बुरे समय हो, जिस व्यक्ति के अंदर ये गॉड वर्ड एटीट्यूड होगा, इस प्रकार का गॉडलीनेस होगा, what will he do? He will always have the confidence and that faith to believe that his God exists. His God is with him. And that will enable him to have a better relationship with God every day. Yes. हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है वो कमजोर नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा?
वो बढ़ते 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 जाएगा. In every relationship, when you look at any relationships, हम देखते हैं, the more you get to know that person, the more you get to remember or think about that person, उस व्यक्ति के बारे में हम जितना सोचे, जितना उनके साथ बात करें, conversation करें, उनके साथ हम रहे, what will happen? Our relationship gets more stronger rather than getting weak. That is what godliness is. Yes. जैसे मैंने कहा, godliness is not just wearing a white shirt and a white trouser and telling the world, come on, I am a godly person. No, that is fake godliness. लेकिन godliness कहाँ पर होना चाहिए? हमारे हृदय में, हमारे attitude में एक भक्ति होना चाहिए परमेश्वर की तरफ. That's the first aspect. The second aspect is doing what pleases God. हमारे जिंदगी के हर एक steps में we need to have that question mark. Will this please God or will it make him angry? Or will it upset him? I wouldn't say angry. My God is not angry with me. No, I will not say that. That's a wrong word. God is not angry with me. But will it please him or will it upset him? That's the question. Godliness as an action is to do what God wants us to do. आप बोलेंगे कहाँ से पता चलेगा? वचन में God has given us the instruction for everything in our life. हमारे जिंदगी के हर एक जरूरतों के लिए, हर एक everything. You take any part of your life, everything. This is the manual. परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है. God speaks to us. Our attitude should be godliness में, that I want to please God. With my life, with my words, with my thoughts, with my walk, with my preaching, with my singing, with my family, with everything, with my work, with my career, wherever God has put me, I want to ensure that I'm pleasing God more than pleasing man. Come on, we all love to please man. हम लोग जब we want to go somewhere out, सोच कर देखिए, when we are going out, हम लोग क्या करेंगे? we will put the best dress, we will put the best t-shirt, the best trouser. Why? Because we want people to be impressed with our looks. I'm not saying that's bad, लेकिन उससे बढ़कर हमारा जिंदगी, हमारे लाइफ से, our thought process, our attitude should be, God, are you pleased with me? That's pure godliness. वो भक्ति है जो यहाँ पर पतरस कहता है, भक्ति में बढ़ो. Oh, you need to grow in your godliness to God, or in that attitude of godliness. Godliness is fear of God. Oh yes, godliness is fear of God. When we speak about the fear of God, it is not the trembling fear. Very important. Many Christians, many believers even today tremble and shake before God. No, that's not the fear that God is speaking of. In fact, the Bible speaks in one of the verses, I forgot to mark that word, but there is one of the word where it says, even the devil, even the Satan fears and he trembles before God. But for you and me, we fear God and we don't tremble, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के तरफ जब when I think about God, it is not terror. Come on. कई बच्चे जब उनके माता पिता के बारे में, उनके डैडी के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? टेरर आ जाता है. अरे आज पापा आएगा, आज मारने वाला है. That's not the fear that we need to have with our Heavenly Father. He is a compassionate, He is a loving God. Our fear, जहाँ पर वो कहता है कि fear के बारे में, it is not the fear of judgment या फिर परमेश्वर का punishment आएगा, परमेश्वर मुझे मारेगा. नहीं, ऐसा fear हमारे अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए. Very important. अगर वैसा fear हमारे अंदर है तो क्या होगा? We will not have a healthy relationship with our Heavenly Father. I know of somebody who was speaking to me some years back, one young man. So he was saying, I can't be with my parents for more than 10 days. He said maximum 9 to 10 days. So he was asking me, 9, and how do you live with your dad? So he was saying, I can't be with my parents for more than. I said, why? He said, my father is a terror. He said, my father is a terror. He will never speak to me well. If ever we both have to speak, it has to be a clash. या फिर अगर पिता और बेटा घर में बात किया तो वहां पर क्या होगा? उस दिन World War 4 है.
या फिर World War III है, लेकिन वचन कहता है दैट्स नॉट द फियर वी शुड हैव. आवर फियर इज आवर रेवरेंस टू गॉड. हम परमेश्वर से फियर, हम उनका भय मानते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर एस्टॉनिश्ड बाय द वे ही लव्ड अस. We are so surprised. जब हम पापी थे, जब हम कीचड़ में थे, वहां से हमें उठाकर ले आने वाला उस परमेश्वर का हृदय को, उसका प्रेम को देखकर हम भयभीत नहीं, we are not like terrorized, पैनिक नहीं है, लेकिन we are reverence God. How can you be so good? Have you ever had that feeling? जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो, when you look at the way he has forgiven your life, जैसे हमारा पास्ट था, हमारा जिंदगी में हम कितने बार परमेश्वर में हम गिरे, we became weak in our lives, लेकिन जब परमेश्वर, God has been so faithful to us. Come on, there are so many occasions in my life when I think about my heavenly Father, I feel like, come on, I'm astonished. He is so good. My God is so good. That's the fear. That's godliness in our lives. We should always be fascinated. Fascinated is the right. I don't know if I can get a Hindi word to it. Fascinated with the way our God has loved us. The relationship that he made with us. Many a times हम लोग कई बार प्रभु का प्रेम हमारे ऊपर आ गया. He showed his action, he showed his love towards us. लेकिन कई बार हम उसे maintain नहीं कर पाते, है कि नहीं? Because of our life, because we are into the world. हम दुनिया के बारे में सोचते, लोगों के बारे में सोचते. We do not think about our God. We do not have a God word attitude. जब वैसा attitude नहीं होता, what happens is we are not fascinated. We are not, what do you say? हम उनका उस प्रेम को, उसका value नहीं करते. We need to understand and know that our God loved us so much. Hallelujah. If you really believe in what I'm saying, come on, go ahead and say an amen and say, thank you, God, for loving me so much. Hallelujah. And when we grow in godliness, listen to this, जब हम इस भक्ति में हम जब बढ़ेंगे, when we are growing in that godliness, I'm talking about not fake godliness, what lot of people do today in the world. I'm not talking about that. I'm talking about pure godliness inside, that attitude हमारे अंदर. It will show in our love relationship towards God and His people. Yes. हम परमेश्वर के तरफ जो हमारा प्रेम है, उसका रिलेशनशिप हमारे जिंदगी में अगर कोई देखेंगे तो पता चलेगा, भाई ये परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति है. We don't need to tell the world. We don't need to tell everybody, come on, I love God, I love God. There are many people who keep saying that. We don't need to do that. लेकिन हमारा हृदय, हमारा क्वालिटी, हमारा कैरेक्टर, हमारा रिलेशनशिप, the way we deal with people, हम जब लोगों के साथ, हमारे परिवार में, बाहर जहां पर भी जाए, people will look at and say, yes, he's a godly man. Not because of my outfit, not because of my clean shave, not because of the lifestyle, but because of the character in me, because of my life, people will say, he's a godly man. That's godliness. वो pure bhakti है, bhakti. Yeah. Godliness is a result of loving God. Godliness. अगर हमारे जिंदगी में godliness बढ़ना है, as पतरस कहता है, grow in godliness, it is a result of, keep loving God. परमेश्वर से और प्रेम करो. जितना हम प्रभु से प्रेम करेंगे, I am telling you, we are growing in our godliness, in that attitude towards God. Then हमारे जिंदगी में जब सुबह सुबह उठेंगे, we will not think about our phones. We will not think about Facebook में किसने मुझे like किया. We are not thinking about Instagram. We are not thinking about anything in the world. But early in the morning when I wake up, it's all about my God. When I go to sleep, it's all about God. When I'm moving around, it's all about God. When I need to take a decision, it's all about how would He feel about it. या फिर परमेश्वर का हित इसमें क्या होगा. Our mind will be, what do you say, filled with God's thoughts and His presence. Wow. We'll be conscious of God in our life always. That's godliness, my dear people. And Peter says, grow in that level of godliness in our life. Hallelujah. A godly person will show respect
For God, when they study and obey the word of God, a godly person, एक व्यक्ति जो परमेश्वर में सही भक्त है, सही भक्ति में बढ़ रहा है, he will respect God's word. वो सिर्फ मिरेकल के पीछे नहीं जाएगा. या कई लोग सिर्फ मिरेकल चाहिए, सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, सिर्फ छुटकारा चाहिए, सिर्फ अनॉइंटिंग. नो 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 नो. इफ यू आर प्योर गॉडली है, अगर आप भक्ति है, अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है, तो क्या होगा? वी विल नो हाउ टू रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन का आदर करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, वचन में स्थिर रहेंगे. दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग godly. Hallelujah. Quickly, I don't know if I think little more time. 3 traits of godliness. हमारे जिंदगी में अगर एक व्यक्ति को, अगर आपको godly बनना है, और if you are godly, अगर आप godly हो या फिर भक्ति में बढ़ रहे हो, there are 3 traits, 3 things उस व्यक्ति में होगा. पहला होगा, they will have a discipline of worship in their life. They will grab. उनके जिंदगी में worship सिर्फ एक Sunday activity नहीं होगा. Receive this word. Some people receive this word. Worship should not be a Sunday morning activity. Worship should not be just an evening activity. No, it happens on Sunday when we come together. It's a corporate worship. But worship should be my lifestyle. मैंने ये कई बार प्रचार किया है. जब आराधना के बारे में कहो, I don't need to have a worship team along with me. No, I don't need to be inside the church. That's good. That fellowship is important. लेकिन जब आराधना के बारे में कहो, I can worship God in the outside. When I'm in the nature, when जब बाहर बैठा हूँ, I can worship God. When I'm traveling, I can worship God. When I'm in my distress, I can worship God. Paul and Silas worshipped God when they were bound with chains inside the prison. जहां पर कोई नहीं था, जहां पर लाइट नहीं था, जहां पर गर्मी था, जहां पर their hands and their legs were chained, लेकिन वहां पर भी वचन कहता है they had a lifestyle of worship. How many of us have that lifestyle of worship? Again, worship is not only singing songs. Please, that's a wrong concept. People think आराधना का मतलब है कि सिर्फ गीत गाओ. नहीं, वर्शिप हमारे हृदय में, वर्शिप इज थैंकिंग गॉड, वर्शिप इज हम परमेश्वर के बारे में सोचकर, मैं यहाँ पर भी बाहर बैठूं, व्हेन आई एम लुकिंग एट द स्काई, व्हेन आई एम लुकिंग एट द नेचर, कम ऑन, दैट्स वर्शिप. ओह वाओ, माय गॉड क्रिएटेड इट. मेरा परमेश्वर ने इसे कितना बढ़िया बनाया है. वो इस वृक्ष को देखो, परमेश्वर ने कितना ब्यूटीफुल बनाया है. लुक एट दोस माउंटेन्स दैट आई सी, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. माय गॉड क्रिएटेड इट, एंड दैट्स वर्शिप. वो हमारे अंदर होना चाहिए. When we look at worship, worship is an ongoing experience of connecting with God, knowing that God is with us. That's worship. हम लोग, कई लोगों को ये एस्पेक्ट अभी तक मिला नहीं है. वी फील आराधना कहाँ पर सिर्फ कलीसिया में होना है, आराधना कभी होना है सिर्फ रविवार को होना है. नहीं, दैट्स अ कॉर्पोरेट वर्शिप, दैट्स अ फेलोशिप. वो एक कांग्रीगेशन है जब हम एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति महिमा करते. लेकिन ये जो आराधना का लाइफस्टाइल है, ये हमारे जिंदगी में हर समय, हर दिन होना चाहिए. Even lockdown में होना चाहिए. Even when churches are shut down, worship should be part of our lifestyle. ये हर समय हमारे जिंदगी में, it's an ongoing process which is connecting us with God and knowing that God is with us. Hallelujah. Praise the Lord. That's one of the traits of being godly. एक भक्ति, जिस व्यक्ति में परमेश्वर का सही प्रकार का भक्ति है, उनमें क्या होगा? आराधना होगा. Second, they will live a righteous life. Living a righteous life is important. हमारे जिंदगी में, if we want to be really godly, we want to grow in our godliness, then living a righteous life is important. Means to be separated from sin and anything that is evil in this world. हमारे इस दुनिया में, if there is anything that takes you away from God, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से आपको अलग करता हो, that's sin, that's a sin. वो एक पाप है. And Bible कहता है, when we want to grow in godliness, हमें अगर परमेश्वर का भक्ति में बढ़ना है, we need to ensure that we are keeping away ourselves away from things that will take us away from the presence and the love of God.
वही पौलुस कहता है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कम ऑन, व्हाट कॉन्फिडेंटली सेज, ओ नथिंग, नो पावर, नो अथॉरिटी, एनीथिंग अबाउट, नथिंग बीनीथ, इस दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से मुझे सेपरेट कर सके. दैट शुड बी आवर टेस्टिमनी. लॉर्ड, नथिंग विल टेक द प्लेस ऑफ God in my life. That's pure godliness. That's a trait of godliness. Once you are in the Lord, you have a new lifestyle, a holy lifestyle, which is through the Holy Spirit leading. जब हम परमेश्वर में आते हैं, when you and I, हम जब परमेश्वर को अपना उद्धार करता हम मानकर, when we are in this kingdom, the Bible says we are led by, not by the world, not by our own will, but there is a Holy Spirit, पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर देता है जो हमें he can lead us, वो हमें लीड कर सकता है, and he will only lead us in the perfect will of God. So that's a trait, वो एक trait है, वो एक मार्क, एक साइन है एक व्यक्ति का जो पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किया हो, then they are godly, या फिर एक godliness है उसमें. Okay. When you read Romans 5:17, रोमियो किताब 5वां अध्याय उसका 17वां वचन, once you are in the Lord, God counts you righteous, you are the righteousness of God, and gift we have received from God. That's a righteousness, वो एक गिफ्ट है परमेश्वर हमें देता है. Yes, when we read Romans 5:17, आप लेकर पढ़िए Romans 5:17, Romans 4:3, 4:9, 2 Corinthians 5:21, Galatians 2:21, Galatians 3:6-11, इन सारे वचनों में वो कहता है कि ये जो righteousness है वो परमेश्वर का एक गिफ्ट है हमारे लिए. You and I, when we believe in God, हम जब परमेश्वर पे विश्वास करते, परमेश्वर पर प्रेम रखते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, when we are trusting and believing in God, the Bible says that righteousness is a gift to us. परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो धार्मिकता, वो righteousness परमेश्वर हमारे ऊपर देता है. And when we live according to His word, when we are living according to the leading of the Holy Spirit, come on, we are growing in our godly nature. हमारा जो गॉडलीनेस में, जो भक्ति में हम बढ़ते 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 जाएंगे. हालेलुया. Our faith in God and walk with Him helps us to be righteous living with Him. Hallelujah. Write it down. Our faith in God, हमारा विश्वास परमेश्वर में. When we read the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, for everybody who believed in God, Abraham believed in God, परमेश्वर ने विश्वास किया, विश्वास किया, and the Bible says that was counted as righteousness for him. उसके लिए वो एक धार्मिकता था. हमारे लिए और आपके लिए भी, when we trust and we believe in God, that itself becomes righteousness for us, and that will enable us to live a life which is pleasing to God. You're getting the connection? हमारा विश्वास परमेश्वर में होना, विश्वास जब बढ़ेंगे प्रभु पे विश्वास कर जब when we are living our life according to His word, come on, that all becomes righteousness to us. That's our what do you say? That's our godliness. धार्मिकता है परमेश्वर के सामने. Hallelujah. So that's one of the traits. The trait, righteous living. And the third trait is cultivate an appreciation of God, या फिर हार्ट ऑफ थैंकफुलनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक व्यक्ति जो गॉडली है, जो भक्ति में बढ़ रहा है, he will always look for reasons to thank God. उनके जिंदगी में हर एक विषय में, छोटा विषय हो, बड़ा विषय हो, हर विषय में they will look for reasons to thank God. Yes, hallelujah. The privilege, the blessings, the favor, all that God has put over our lives. How many of us believe that God has favored us? Yes, I can put both my hands and say, yes, आज अगर मेरे जिंदगी में कुछ अच्छाई है, वो सिर्फ परमेश्वर ने दिया हुआ है. Everything, there is nothing I can say that I have earned on myself, या फिर मेरे अच्छे कर्म से, या फिर मेरे कुछ श्रम कर मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे मिला. नहीं. Whatever, even if I worked hard, the strength my God gave, and I give all credit to God. That should be our attitude always. For everything,
for the food, for the clothing, for the shelter, for the job, for our family, for our friends, for our church, for our people, for our city, for our nation, for everything that we have received. We should have a heart of gratitude. Count your blessings. There is a song, count your blessings, name them one by one. You keep counting. आप जितना परमेश्वर के आशीष को आप काउंट करते, उसे नंबर दोगे, नंबर्स कम पड़ जाएंगे, करोड़ों करोड़ों नंबर्स कम पड़ जाएंगे. आपने जितना सोचा है, पढ़ा है, उतना नंबर से भी बढ़कर होगा परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में. इनफैक्ट आई वुड से द ब्रेथ दैट वी टेक, कम ऑन, वी गॉट टू बी थैंकफुल टू गॉड. किसी ने मुझे आई रेड समवेयर, इफ यू गो टू हॉस्पिटल, आप अगर एक हॉस्पिटल जाओगे, अगर आपको ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का जरूरत है, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का प्राइस इज इन थाउजेंड्स. इट इज इन थाउजेंड्स. हमारे घर में भी था, व्हेन पापा वाज देयर, वी हैड द स्मॉल बॉटल ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा पुस करेंगे, थोड़ा ऑक्सीजन आएगा. दैट वन बॉटल ऑफ ऑक्सीजन वाज अबाउट 600-700 रुपीज. एंड हाउ मेनी, कितना, 5 to 10 या फिर 15 times something you can pump it in. उतना ही है. उतना ऑक्सीजन के लिए 600 रुपए. Look at the oxygen that God has given us. The oxygen, the fresh air that He's given us. Oh, how much should we be thankful to God for every blessing that He has given us. Hallelujah. Have a heart of gratitude towards God. A heart of thankfulness glorifies God and makes His grace much more abound in us. Write it down. Please write it down. इस वचन को आप लिख के रखिए, बोल्ड लेटर्स में लिख के रखिए. When you have a heart of thankfulness, छोटे छोटे चीजों में, स्मॉल चीजों में, छोटे छोटे अनुग्रह में, when you have a heart of thankfulness, you keep thanking God, that itself opens the door for more grace in our life. Wow. You getting it? When we have a heart of thankfulness, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं. We will not, what he say, we will not crib before God. One simple example. एक simple example देकर मैं खत्म करूंगा. When we know Jesus told his disciples, come on, go and get some food and feed the thousands of people. वहां पर 5-10 हजार लोग थे, उससे ज्यादा बढ़कर लोग थे. And वचन कहता है, all that they had was 5 loaves and 2 fish. उतना ही था. 5 loaves of bread and 2 fish. इतना फूड लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेता है. यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, अरे तुम्हें इतना ही मिला क्या? अरे इतने सारे लोग हैं, तुम इतना खाना लेके आओ. Whom are you going to feed? Come on, you go and eat. These are the words that we might say. लेकिन what did Jesus do? He took it in his hand and he blessed and he said, thank you God. He just blessed it and he said, thank you God for what I have received. And the Bible says it multiplied. When you and I have a heart of gratitude and thankfulness towards God, listen to this, it opens the door for God's grace to abound in our life more and more and more. He will be pleased with our life. He wants to bless you more. Come on, more blessings, more promises. His grace will just abound in our lives always. Have a heart of gratitude and appreciation towards God always. Thankfulness as an attitude honors God and strengthens our relationship with God and His people. Yes, when we have a heart of gratitude, जब हमारे अंदर वो thankfulness है परमेश्वर के लिए, it only strengthens my relationship with God. Don't complain to God. अगर हमारे अंदर उस प्रकार का एक quality नहीं है, that's a wrong quality. अगर we keep complaining to God, pray, God, remove that from me. Give me that attitude of gratitude and thankfulness, and that's been godly in the presence of God. I've got so much more to speak about it, lekin I know our time is less. What does godliness do? Quickly finish it. Godliness towards God, हमारे और परमेश्वर का, it pleases God and it is accepted in His sight. When we are godly, जब हम भक्ति में बढ़ते जाए, वचन कहता है परमेश्वर हमसे खुश होंगे. He will be more pleased when I'm truly godly in His presence. And in हमारे जिंदगी में क्या होगा? When we are godly, it makes a difference in our lives. हमारे जिंदगी में भी एक परिवर्तन आएगा अगर हम सही प्रकार से भक्ति में बढ़ोगे.
in our jobs, in our finances, in our family, in our health, हमारे जिंदगी के हर एक एरियाज में you will see a change, a positive change when we are godly in attitude. And third, with other people, it will impact our relationships with others around us. चाहे हमारा फैमिली हो, लोग हमारे ऑफिसेस में हो, जहां पर भी हम जाए, it will only improve our relationship with others when we are truly godly by nature. Hallelujah. That's being godly. और वचन कहता है, if you want to be prosperous, अगर आपको prosperity चाहिए, आपको उन्नति चाहिए, आपको बढ़ना है परमेश्वर में, being godly is important. Not fake godly. लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हृदय से परमेश्वर को अपना कर, have that attitude, and I'm telling you, our life will be blessed. Aye, let's close our eyes in prayer. Our precious, loving Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful evening that you've given us to come together with our devotion, Father. Lord, we've been learning and understanding from your scripture, Lord, that you have created us not to struggle, but you created us to be prosperous in every area of our life. But many of us lack that prosperity, not because you are not faithful, but we know, Father, there are aspects, there are qualities in our life that we need to develop. And we thank you, God, for this word, especially today as we learned. Help us to be godly in true sense, Father God, not to show the world, but Lord, when you look into our hearts, when you look into our attitude, when you look into our thoughts, and when you look into our own lives, you will be pleased with it, Father. We pray, help us to have that kind of a lifestyle these days, a lifestyle of worship, a lifestyle of being thankful to God, a lifestyle of appreciating God for everything that you've given us, Lord, and valuing every blessings in our lives. प्रभु, हम हर एक को तू आशीष कर कि तेरे वचन को जैसे हमने सुना, हमने सीखा, उसी के अनुसार हम हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाए और तेरे उन्नति को, तेरे आशीष को हमारे जिंदगी में हम पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु, हम हर एक को तू आशीष कर, हमारे परिवारों को आशीष कर, हमारे कलीसिया को तू आशीष कर। प्रभु, we thank you, God, that you heard our prayers. We give all glory, honor, and praise to you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's godly people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Thank you once again for joining me today. I hope that you were blessed with that word. We will continue our series next Tuesday. Keep us in your prayer as we are traveling tomorrow early morning. See you all soon. Till then, stay safe. God bless you. God bless you.